Thera vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Haribo Nitai Gaur Haribo Jai Jai Prabhupada Gaur Premanande Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter number 15, entitled The Descendants of King Priyavrata. This morning, text number 12. हम स्कंद 5 अध्याय 15 जिसका शीर्षक है राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन, और आज हम श्लोक क्रमांक 13 पर चर्चा कर रहे हैं। यश यद्वरे भगवान अद्वरात्मा मगोनि मद्याति उरुसुमप्रिते श्रद्धा
Vishuddhachala Bhakti Yoga Samarpitejya Palam Ajahara Yashyadvare Bhagavan Adarnatma Magoni Badhyati Uru Somapite Shraddha Vishuddha Achala Bhakti Yoga Samarpite Jya Palam Apjahara Yashyadvare Bhagavan Advaratma Magoni Madhyati Uru Somapite Shraddha Vishuddha Chala Bhakti Yoga Samarpite Jya Palam Ajahara. Okay. Yashya, of whom King Gaya, Advare, in his different sacrifices, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Advara Atma, the Supreme Enjoyer of all sacrifices, the Yagna Purush, the Yagna Purush. Magoni, when King Indra, Madhyati, intoxicated, Uru, greatly, Somapite, drinking the intoxicant called Soma, Shraddha, by devotion, Vishuddha, purified, Achala,
and steady. Bhakti yoga by devotional service. Samarpita offered. Ijya of worshipping. Palam the result. Ajahara accepted personally. Translation. In Maharaj Gaya's sacrifices, there was a great supply of the intoxicant known as soma. King Indra used to come and become intoxicated by drinking large quantities of soma ras. Also, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the Yagna Purush, also came and personally accepted all the sacrifices offered unto him with pure and firm devotion in the sacrificial arena. महाराज गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोम रस पीकर मदान्ध हो जाते थे। भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष भी आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार करते थे। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Gaya was so perfect that he satisfied all the demigods who were headed by the heavenly king Indra. Lord Vishnu himself also personally came to the sacrificial arena to accept the offerings. Although Maharaj Gaya did not want them, he received all the blessings of the demigods and the Supreme Personality of Godhead himself. तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज गए इतने सिद्ध थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता उनसे संतुष्ट रहते थे। भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में हव्य ग्रहण करने के लिए आते थे। महाराज गए को अनिच्छित ही देवताओं तथा श्री भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुआ करते थे। Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha. Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing further the glories of Maharaj Gaya, how he was such a great king. Such a wonderful king that when he performed sacrifices, because remember it wasn't Kali Yuga, it was other, probably it was what, Satya Yuga, descendants of Priyavrata, yes, must have been like Satya Yuga. And he was performing sacrifices, and we're told here that by the performance of sacrifice, he would produce a lot of somaras, and the somaras, it's
an intoxicant which is sought by the demigods. And so the heavenly king Indra personally came down to this planet Earth to accept the somaras, and he would become intoxicated. So we have to understand that the kind of intoxication which the demigods taking is of a different nature from what we call intoxication on this planet. When you take intoxicants here on this place, the normal, what we generally call intoxicants, things like alcoholic beverages and even caffeine substances. There's so many other kinds of intoxicants. Even tea is an intoxicant. But these intoxicants which we have here, which are generally taken by common people, they give sinful reactions. They don't help, they don't purify, they bring sinful reactions. But somras is of a different nature, that by taking somras, people would get pious activities. Just the opposite, be actually beneficial for them. So it's, huh? Translation. Oh yes, I forgot that. Sorry. यहाँ पे हम कई दिन से गए महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये सत्ययुग की घटना है, क्योंकि प्रियव्रत महाराज के वे वंशज माने जाते हैं और इनके यज्ञ में सोमरस नाम का जो मादक द्रव्य था उसका प्रचुर उपयोग होता था। लेकिन ये सोमरस जो है ये कोई साधारण आजकल के भौतिक जगत का या कलयुग का जो मादक द्रव्य होते हैं, जैसे टैटिन या कैफीन या जो भी कुछ होते हैं, उस प्रकार से नहीं था। स्वयं इंद्रदेव, सारे देवताओं के राजा भी उसके लिए आते थे और भगवान विष्णु भी आके उनके हाथ से यज्ञ की आहुति स्वीकार करते थे। Yeah, because I'm coming from South India, South India there's more English speaking there. So, Maharaj Gaya then was very, very great king, that he could perform yajnas which were so pleasing to the Lord. उस समय महाराज गए बहुत महान थे और वे इस प्रकार से यज्ञ करते थे कि स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित होते थे। And the Yagna Purush, Lord Vishnu would personally come and accept the offerings. यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते थे और वो यज्ञ आहुति स्वीकार करते थे। We hear more about the Yagna Purush in the Brihad Bhagavatam Rita, which is Sanatana Goswami's book. हम यज्ञ पुरुष के बारे में ज़्यादा बृहद भागवतम में सुनते हैं, जो कि श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित है। And Yagna Purush is there on Satyaloka, Brahma's planet. He resides there and he accepts the offerings. यज्ञ पुरुष सत्यलोक में स्थित है, जो कि ब्रह्मा जी का ग्रह है। But Maharaj Gaya was such a great king that the Yagna Purush was attracted to come here to this planet and accept the offerings. महाराज गए इतने महान थे कि जब वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ पुरुष इस पृथ्वी तल पर उपस्थित होते थे। In this Kali Yuga, the Kali Yuga is so degraded and people are so fallen that even the demigods don't come here to pass urine. कलयुग इतना डिग्रेडेड हो गया है कि यहाँ अभी जो देवतागण हैं वो भी मूत्र विसर्जन के लिए भी नहीं आते हैं। But we see in India everybody else passing urine everywhere. बट भारत में हम देखते हैं कि यहाँ जहाँ कहीं भी मूत्र विसर्जन होता है। Anyway, these are problems which will take some time to work out the hygiene. यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि समय के साथ इसका उपाय कुछ होगा। So Maharaj Gaya was so wonderful and so perfect in everything that he gave great pleasure to the Yagna Purush and all the demigods. They were all pleased with him. महाराज गए इतने महान थे कि वे भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते थे और सभी देवताओं को भी अपने यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करते थे। And we know there's 33 crore devatas, so he must have been really a great soul to satisfy so many people.
हम जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनको प्रसन्न करना कितना बड़ा कार्य है, परंतु महाराज गए उनको प्रसन्न करते थे। And we're told the demigods and the Supreme Lord, they all gave their blessings to Maharaj Gaya, but he didn't want them. देवी देवता तथा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु महाराज गए को आशीर्वाद दिया करते थे, जबकि वो नहीं चाहते थे। We see, as they're doing the Ganesh Puja, they're all anxious to get blessings. हम देखते हैं कि गणेश पूजा में सभी लोग चिंतित रहते कि उनको कैसे गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। Everybody's trying to get different blessings from different devatas. They all have material desires. अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता है। Chaitanya Charitamrita says, Akama sarvakamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. That the people, akama, people have no material desires, sarvakama, all material desires, moksha kama, desire liberation, none of these people are peaceful. चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक के अनुसार चाहे किसी को इच्छा हो इच्छा न हो, परंतु इस भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं है। But who is peaceful? One who just simply wants devotion. He is peaceful. He has no material desire. शांत कौन है? जो जिसके भौतिक इच्छा नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति शांत है। So this is the nature of Maharaj Gaya. He was a perfect king. He had no material desire. He was fully satisfied. तो यह स्वभाव महाराज गए का था, जो कि पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। Just the Dhruva Maharaj went to the forest and initially had so big material desire. He wanted to get a kingdom greater than his father. जिस प्रकार से ध्रुव महाराज को बहुत महान इच्छा थी और उस इच्छा की प्राप्ति के लिए वो जंगल गए, उन्हें उनके पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए था। And he went there into the forest, and with the blessings of Narada Muni, he got good instructions from Narada, and he went on to see the Lord within 6 months. इस प्रकार से वे जंगल में गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई, और नारद मुनि के आदेशानुसार उन्होंने 6 महीने में भगवान की प्राप्ति की। Of course, it was not easy for him. He had to do great austerity. निश्चित रूप से यह उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, उन्होंने बहुत महान तपस्या की। And at that time, he was only a child of 5 years of age. उस समय वो केवल 5 वर्षीय बालक थे। But by dint of his austerity and tapasya, he was able to bring about suffocation among the demigods. परंतु उनकी तपस्या इतनी महान थी कि वो देवी देवताओं को भी सफोकेशन कर रही थी। Because he was controlling his breathing, the demigods were all suffocating. जब वो अपनी वायु को नियंत्रित करते थे तो उससे देवी देवता भी परेशान हो जाते थे। And the whole universe was heating. और पूरा जो ब्रह्मांड है वह गर्म हो रहा था। And the Lord had to come to see Dhruva to satisfy his demand. और इसीलिए भगवान को आना पड़ा ध्रुव महाराज के दर्शन के लिए। And when the Lord appeared there on the back of Garuda, then Dhruva Maharaj admitted that he said, I have come here looking for pieces of broken glass. जब भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके पास आए तो ध्रुव महाराज ने यह स्वीकार किया कि मैं टूटे हुए कांच के लिए आया था। But instead I have found the most beautiful jewel. परंतु इसके अलावा मैंने बड़े रत्न की प्राप्ति की है। And then Dhruva Maharaj said, Swamin kritatosmi varam nayachi. Now I am fully satisfied. और इस प्रकार से इस श्लोक के अनुसार ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं अब पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। We're all looking for satisfaction. We want to be satisfied. हम सभी संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम सभी को संतुष्टि चाहिए। Actually, to be satisfied is one of the qualities of one in the mode of goodness. और सत्व गुण का ये गुण होता है कि वह व्यक्ति संतुष्ट होता है। When Rukmini's marriage was arranged to Shishupal, she wrote a letter to Lord Krishna and she gave it to a brahmana to go there to Dwarka and deliver it to Krishna. जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय किया गया था, तब रुक्मणी माता ने एक पत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण को भेजा एक ब्राह्मण के द्वारा। And so when the brahmana came there in Dwarka and was able to meet with Lord Krishna, then Lord Krishna first of all
and received the Brahmana nicely and inquired from the Brahmana about his situation. जब ब्राह्मण उस पत्र को लेकर द्वारका में आए तो भगवान श्री कृष्ण उससे सर्वप्रथम मिले और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से पूछा. Lord Krishna wanted to know from the Brahmana, are you doing your duties nicely? Are you satisfied? क्या आप आपके कर्तव्यों को ठीक प्रकार से कर रहे हो? क्या आप संतुष्ट हो? This is very important for all of us coming to Krishna consciousness to maintain a satisfied peace of mind. यह हम सभी के लिए जो कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी संतुष्ट रहें. We should be satisfied with something, but at the same time we shouldn't be satisfied with certain things. We should want more. We should want to distribute Krishna consciousness. हम कुछ चीज़ों के साथ संतुष्ट रहे, परंतु कुछ चीज़ों के साथ संतुष्ट हमें नहीं रहना चाहिए. हमें प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करें. So we should be satisfied with our material situation. हम हमारी जो भौतिक स्थिति है उससे संतुष्ट रहे. We shouldn't be anxious to increase our eating and sleeping and our comfortable living. These things are not important for devotees. हम इसके लिए चिंतित ना रहे आहार, निद्रा और आरामदायक जीवन के लिए. But we shouldn't be satisfied with the situation in the world. हम संतुष्ट नहीं रहे जो भी हमारे भौतिक जगत में हमारे आजू बाजू चल रहा है. We should want to see more people coming to Krishna consciousness. हम यह देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृष्ण भावनामृत में आए. We should like to see the whole world become Krishna conscious. हम ये देखना चाहते हैं कि पूर्ण जगत जो है कृष्ण भावनामृत हो. And so in that sense we should never be satisfied. तो इस माध्यम से हमें चाहिए कि हम कभी भी संतुष्ट ना हो. Srila Prabhupada gave us a lot of goals which are very difficult to achieve. श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कई उद्देश्य दिए हैं जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है. Prabhupada said the high court judges should all have tilak. They should be wearing tilak on their forehead. श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन्होंने तिलक धारण करना चाहिए. And all the members of parliament, all the government leaders, they should all be twice initiated brahmanas. और श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो संसद के सदस्य है या जो बड़े बड़े नेता है वे ब्राह्मण इनिशिएटेड हो. So Prabhupada had a lot of goals he wanted to achieve. तो श्रील प्रभुपाद जी के पास कई सारे उद्देश्य है जिन्हें प्राप्त करना है. I hear Bhakti Vikas Swami is writing a book on Prabhupada's mission. He's already got 2 volumes, I think. Anyway, certainly Prabhupada's mission, you could write many volumes on Prabhupada's mission. परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी एक ग्रंथ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी के आंदोलन, और वो कह रहे हैं कि हम उन्होंने 2 पुस्तक लिख चुके हैं और उनका मानना है कि हम कई सारे पुस्तक प्रभुपाद जी के मिशन के ऊपर लिख सकते हैं. Anyway, Maharaj Gaya was such a wonderful king that he was fully satisfied. He didn't want blessings from any of these demigods. तो इस प्रकार महाराज गए बहुत ही संतुष्ट थे, महान राजा थे और वो किसी प्रकार का भौतिक आशीर्वाद नहीं चाहते थे. Because the nature of devotional service is such that one will feel fully satisfied. If we are actually engaged in pure devotion, we will be satisfied. भक्ति का यही स्वभाव है कि यदि हम शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं. We see Srila Prabhupada in his traveling and preaching, how he was satisfied. हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि कैसे उनके प्रचार के समय या उनके रहते हुए वे पूर्ण रूप से संतुष्ट थे. He came to London and we didn't have a luxurious building or luxurious facilities for him. But he didn't complain. जब वे लंदन आए थे तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम उनके पास किसी प्रकार की सुविधाजनक उनकी व्यवस्था नहीं थे, परंतु फिर भी प्रभुपाद जी संतुष्ट थे. And it happened one time, a devotee came from USA, came from like San Francisco, I think it was, and he came to London to help us to develop the Sankirtan there.
एक बार एक भक्त अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को से लंदन में आए, जो कि लंदन के भक्तों की मदद करना चाहते। And when he came there and saw our living conditions, he wasn't very impressed. और जब उन्होंने वहाँ देखा कि जीवन का जो स्तर है तो वो बहुत खुश नहीं हुए। And when he saw Prabhupada's room, he thought, oh no, this is not very good, this is not enough for Prabhupada. और जब उन्होंने प्रभुपाद जी का कमरा देखा तो उन्होंने कहा कि ये प्रभुपाद जी के लिए पर्याप्त नहीं, और ये प्रभुपाद जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। So he wrote to Prabhupada and he told Srila Prabhupada, when you come to London next time, we'll rent you a hotel suite. We'll get you a nice suite in the hotel. He said, I think it will be better for you. तो फिर शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने लिखा कि जब आप अगली बार लंदन जाए तो आप हमें बताएं, जिससे कि हम आपके लिए एक होटल बुक करें ताकि आपके रहने की अच्छी व्यवस्था हो सके। But Prabhupada wrote back to him and said, no, I'm not going to stay in a hotel. I like that room. प्रभुपाद जी ने कहा उन भक्तों को लिखा कि मैं होटल में नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं जिस कमरे में रुका था मैं उस कमरे को पसंद करता हूँ। I can be there with the deities and with the devotees. Why I would go and live in a hotel? मैं वहाँ विग्रहों के साथ और भक्तों के साथ रह सकता हूँ, मैं होटल में क्यों रहूँ? That is the mood of the pure devotee, that they're not worried about their own personal conditions. तो यह एक शुद्ध भक्त का स्वभाव होता है, वो स्वयं के आरामदायक जीवन की कभी चिंता नहीं करता। But they're worrying about others, Prabhupada was concerned about the deities. Are we worshipping the deities properly? परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दूसरे की चिंता करते हैं, और जैसे कि शिला प्रभुपाद जी विग्रहों की सेवा के बारे में अधिक चिंतित थे। Are the offerings nice? Are the offerings of proper standard, and is everything offered on time? The cleanliness standards being maintained? क्या प्रभुपाद जी पूछा करते कि क्या विग्रहों को भोग समय पे लग रहा है, क्या स्वच्छता ठीक प्रकार से चल रही है? Just like here, it's told Maharaj Gaya was doing sacrifices, and the Yagna Purush was personally coming to receive the offerings. जिस प्रकार से यहाँ महाराज गए जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ पुरुष स्वयं उपस्थित होते थे यज्ञ को स्वीकार करने के लिए। Just like there's a pastime of the young boy. What's the young boy's name who offered the laddu to the deity again? Raghunandan, right? Raghunandan. So Raghunandan and his father Mukunda. Mukunda was a doctor, and sometimes he had to go out of station to go and meet patients and so on. So he told his son, Raghunandan, that you have to make the offering tomorrow. I won't be able to make the offering. I'm depending on you. जैसे कि चैतन्य चरितामृत में ये कथा आती है कि रघुनंदन नाम के एक छोटे से बालक थे जिनके पिता मुकुंद, जिनका व्यवसाय एक वैद्य थे, तो उनको कई बार अपने घर से बाहर जाना होता था। तो ऐसे ही एक दिन वो बाहर गए, तब उस बालक को भोग लगाने के लिए कहा गया। And he said, this deity has been in our family for generations, so it's very important. I'm trusting you to make the offering. उन्होंने कहा कि ये जो विग्रह है ये हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको समय पर भोग लगाना है। And so Raghunandan, the father went away. Next morning, Raghunandan dutifully took his bell and brought the offering plate and began to offer to the deity. दूसरे दिन मुकुंद जो है वो अपने कार्य के कारण बाहर गए और उनके बालक रघुनंदन ने पूर्ण रूप से तैयार भोग की जो प्लेट है वो लेकर भगवान के सामने घंटी लेकर वो ऑफरिंग करने के लिए गए। But the deity was not accepting the offering. So Raghunandan began to plead with the deity that please take, please eat. विग्रह जो है वो भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो रघुनंदन उनके सम्मुख प्रार्थना करने लगे कि कृपया यह भोग आप स्वीकार कीजिए, कृपया यह भोग आप स्वीकार कीजिए। And somehow, after some time, the deity actually ate the offering. और कुछ समय के पश्चात विग्रहों ने वह भोग जो है वो स्वीकार किया। And so that evening, the father came home and he asked his son, "Did you make the offering?" The boy said, "Yes, father, made the offering." और उस रात्रि को फिर मुकुंद घर पर आए और उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से पूछा कि क्या आपने विग्रहों को भोग लगाया? So father said, "Bring me some prasad."
But the boy said, there's no prasad. तो रघुनंदन ने कहा कि हाँ मैंने भोग लगाया, और जब उनके पिता ने कहा कि मेरे लिए प्रसाद लेकर आइए, तो रघुनंदन ने कहा कि भगवान ने तो पूरा भोग खा लिया। So father said, what, you ate all the prasad? You ate everything yourself? तो पिताजी ने पूछा कि क्या आपने स्वयं ने उस प्रसाद को खा लिया? He said, no, Krishna ate. तो रघुनंदन ने कहा कि नहीं, वो तो भगवान कृष्ण ने खा लिया। So father was surprised that, this boy is always truthful, he never tells lies. तो पिताजी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये बालक तो सत्य बोला करता था, परंतु ये अभी झूठ बोलने लगा। So father told the boy, he said, tomorrow again you have to make offering again. तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें कल फिर से भोग लगाना होगा भगवान को। And the next day, Mukunda was hiding outside behind the curtains. But he wanted to see the boy make the offering. तो मुकुंद दूसरे दिन पर्दे के पीछे छुपकर देख रहे थे कि रघुनंदन किस प्रकार से भगवान को भोग लगा रहा है। And then the father actually saw how the Raghunandan was pleading with Gopal to take the food, and the deity ate. और पिताजी देख रहे पर्दे के पीछे से किस प्रकार से रघुनंदन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और किस प्रकार से गोपाल जी ने वो भोग स्वीकार किया। So then he could understand his son is really a great devotee. और इस प्रकार से वे समझ पाए कि उनका पुत्र एक महान भक्त है। That deity is still there. The descendants of Raghunandan, the descendants of that family, there's a temple there up in, it's near to Katwa. It's only 2 kilometers away from Katwa. Place called Sri Racha, and you can see the deity there. It's not a very big deity, it's just this big, But Krishna is not limited by size. तो महाराज जी की विनती कर रहे हैं कि ये जो रघुनंदन जी ने जिस विग्रह को भोग अर्पण किया था, तो आज भी वो विग्रह विद्यमान है। कटवा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये विग्रह, जो कि रघुनंदन इनके वंशज इनकी उपासना कर रहे हैं। तो सभी से प्रार्थना करें महाराज जी की उनकी विग्रह का दर्शन करें, और कह रहे कि भगवान की जो साइज है उसके ऊपर उनका कार्य निर्भर नहीं है। So Lord Chaitanya gave personal instruction to this family. They would go to Rath Yatra in Jagannath Puri, and Lord Chaitanya gave them instruction. चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया जब वो रथ यात्रा के लिए जाए, तो उसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें आदेश दिया इन परिवार को। He told the father, Mukunda, you're the doctor, you continue as a physician, and with your salary you can help to maintain everything. मुकुंद जी जो कि वैद्य थे, तो अपने व्यवसाय के द्वारा जो भी धन वो कमाए तो वो मंदिर को, जगन्नाथ जी के मंदिर को मदद करें। And he told the uncle Narahari that you're a preacher, you go and preach. उनके चाचा नरहरि सरकार, तो उनसे कहा कि आप प्रचार कीजिए। And he told Raghunandan, you're with the deity, you worship the deity. और रघुनंदन से कहा कि आप विग्रहों के साथ रहिए और आप विग्रहों की सेवा करें। So Chaitanya Mahaprabhu gave these different services, and we should understand all these services are equally important. चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सेवा दी, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर प्रकार की सेवा बराबरी महत्व रखता है। Somebody is working in a job and they're contributing for the welfare of the devotees. यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है और वह भक्तों की सेवा कर रहा है। Somebody is engaged in preaching work. यदि कोई भक्त प्रचार कार्य में संलग्न है। And somebody else is doing deity worship. और कोई भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहा है। So it's not that we discriminate, oh this is more important, that's more important. It's all equal. और इस प्रकार से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह सेवा महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सेवाएं बराबर है। And they're all pure devotees. They're engaging in pure devotional service. ये सभी सेवाएं जो है शुद्ध भक्ति है, जो कि शुद्ध भक्ति में सेवा ये सभी भक्त कर रहे हैं। But particularly we should understand in worshipping the deity, we must be very conscious of the purity and the punctuality. विशेष रूप से जो भक्त विग्रहों की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए शुद्धता की और समयबद्धता की। Srila Prabhupada stressed these two qualities over everything. श्रील प्रभुपाद जी सभी गुणों के ऊपर इन दो गुणों को महत्व दिए हैं। In the Bhagavad Gita,
in Baladeva Vijayabhusan's commentary on Bhagavad Gita, he talks about the importance of women worshipping the deity, that they cannot worship the deity when they're contaminated. भगवत गीता की टीका में बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि जो माताजी इस विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, तो जब वो अशुद्ध हो तो उस समय विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते. So in cultured homes, when the woman is contaminated, she won't cook. The husband will cook. जब विग्रहों की सेवा घर पर हो रही है, तो जब माताजी अशुद्ध है तो वो उन्हें भोग नहीं बनाना चाहिए, उस समय पति को भोग बनाना चाहिए. In this way, they can keep the purity. और इस प्रकार से हम शुद्धता रख सकते हैं. So, and in our temples, of course, we have these standards. It's very clear. और हमारे मंदिरों में तो यह निश्चित रूप से ऐसे उच्च स्तर है. We want to have the deity personally eat the offerings. हम चाहते हैं कि विग्रह स्वयं भोग को स्वीकार करें. Right? We are offering food in sacrifice. This is a yagna. The Lord should personally eat. हम ये जो भोग है यज्ञ की तरह अर्पण कर रहे हैं और भगवान ने स्वयं साक्षात उपस्थित होकर इसे ग्रहण करना चाहिए. We bring the deities here. We request the Lord to come in the deity. The Lord is personally there. We have to satisfy Him. जब हम विग्रह को यहाँ पर लाते हैं तो हम साक्षात रूप से भगवान को आह्वान करके इन विग्रहों में उपस्थित कराते हैं और इस तरह से भगवान इन विग्रहों के माध्यम से उपस्थित रहते हैं. And the Lord is not anxious for our fruits and flowers, but He is anxious for our mood of pure devotion. भगवान फल या पुष्प के लिए लालायित नहीं होते, परंतु वे हमारी भक्ति को देखते हैं. So it's not just what we're offering, but it's the mood in which we're offering. हम क्या भगवान को अर्पण कर रहे हैं यह महत्व नहीं रखता, परंतु हम किस भाव में भगवान को अर्पण कर रहे हैं वह महत्व रखता है. It's by devotion only that we can please the Lord. हम केवल भक्ति में सेवा के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं. And we see Maharaj Gaya, he was such a great devotee. The Lord's personally coming to accept the offering. और हम देखते हैं कि महाराज गए किस प्रकार से यज्ञ करते थे जिसमें कि भगवान साक्षात उपस्थित होते थे. So we hope also Madan Gopal is personally accepting all the offerings. तो हम आशा करते हैं कि मदन गोपाल जी व्यक्तिगत रूप से हम जो भोग अर्पण कर रहे हैं वो स्वीकार करें. And if one day you go to take the plate off after the offering and there's nothing there, you should feel very joyful. और जब हम यदि इस प्रकार से भोग अर्पण करने भगवान को गए और हम देखेंगे कि जो प्लेट हमने भोग अर्पण किया है वह पूर्ण रूप से रिक्त है, और ऐसी अवस्था में हमें बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए. We shouldn't think, oh no, the deity's eaten everything, there's nothing left. Oh no. और हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि विग्रहों ने सब कुछ ग्रहण कर लिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. There are some temples, you know, they make the big offering, and as soon as somehow the plate comes off, where did it all go, you know? कुछ मंदिर है जहाँ पर विग्रहों को भोग अर्पण किया जाता है, और जब उन प्लेट को वापस लेकर आते हैं तो देखते हैं कि उनमें कुछ ऑफरिंग्स जो व्यंजन है उनमें कमतरता है. The pujaris all take a good share, and then the cooks also take their share. Everything gone. तो जो पुजारी भोग लगाता है वह अपना भाग ले लेता है, उसके बाद जो भक्त कुकिंग करते हैं वो अपना भाग ले लेते हैं. So we want to please the Lord with our devotion. हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम भगवान को अपनी भक्ति में सेवा के द्वारा प्रसन्न करते हैं. In the Chaitanya Charitamrita, there's a nice example of very, very, very pure deity worship. It's in relation to Madhavendra Puri and the Gopinath deity. श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर कथा है माधवेंद्र पुरी और गोपीनाथ के आदान प्रदान की. Madhavendra Puri saw them offering the sweet rice, and he was thinking about how he would like to offer to the Gopal deity, which he found on Govardhan Hill. माधवेंद्र पुरी जी ने एक बार देखा कि गोपीनाथ जी को बहुत ही सुंदर खीर अर्पण की जा रही है, तो उनके मन में ये विचार आया कि इस प्रकार की खीर गोपाल जी को भी अर्पण की जाए. But then he regretted that he was thinking like that. He thought, I shouldn't be thinking about the deity's offering.
परंतु उसके पश्चात उन्होंने पश्चाताप किया कि मैंने इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक गोपीनाथ जी को यह भोग नहीं लगाया गया। But that night, after the pujari had put the deities to rest, and the pujari was taking rest himself, in his dream the deity appeared to him. उस रात्रि को पुजारी ने जब गोपीनाथ जी का शयन किया और उसके पश्चात पुजारी सोए, तो उनको स्वप्न में, उनके निद्रा में उन्हें स्वप्न आया। And the deity told the pujari that I've stolen one of the pots of sweet rice and you should go and take it and give it to Madhavendra Puri. और विग्रह ने उन स्वप्न में कहा उन पुजारी को कि मैंने एक जो बर्तन है खीर का वो चुराया है और जाइए आप उसे माधवेंद्र पुरी जी को दीजिए। So this pujari was such a pure soul that he woke up, he took his bath, and then he went inside to the deity room and he saw the pot of sweet rice there. तो पुजारी ने जब ये स्वप्न सुना तो वे उठे और उन्होंने स्नान किया और उसके पश्चात उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक खीर का बर्तन है। So understand the pujari that he was really a very advanced devotee. He was very pure, very strict. That the Lord came in his dream and personally told him, and he was so careful that he went there, he took his bath, went inside and found the pot of sweet rice. तो पुजारी निश्चित रूप से बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही शुद्ध थे और बहुत ही उच्च स्तर पर थे, जिनके की स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और उन्होंने इस प्रकार का संदेश दिया और उस संदेश को सुनकर वो पुजारी उठे और उन्होंने स्नान किया और वो गए गर्भगृह में और उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो बर्तन था। So Lord Krishna is true to his words. He said, "As you surrender to me, I reward you accordingly." तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सत्य कथन कहे कि जिस भाव से आप मेरे पास आते हो मैं उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ। So to the pure souls, the Lord does reveal himself. तो जो शुद्ध आत्मा होते हैं उनके साथ निश्चित रूप से भगवान अपने आप को आदान प्रदान करते हैं। So today is a very special day of the disappearance day of Srila Namacharya Srila Haridas Thakur. आज एक विशेष दिन है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर इनका तिरोभाव दिवस है। So if you allow, we would like to speak a little bit on the glories of Srila Haridas and particularly about his disappearance. यदि आप अनुमति देते हैं तो हम शिला हरिदास ठाकुर इनके जीवनी पर कुछ कहना चाहते हैं, विशेष रूप से इनके तिरोभाव के अवसर। Krishnadas Kaviraj Goswami has kindly included one chapter in the Anchal Leela describing the disappearance of Haridas Thakur. कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में शिला हरिदास ठाकुर के तिरोभाव दिवस का वर्णन किया है। So he describes there how one morning Govinda came to bring the Mahaprasad to Haridas. वे वर्णन करते हैं कि एक दिन गोविंद ने भगवान का महाप्रसाद शिला हरिदास ठाकुर के लिए लाया। Haridas, of course, was born in Mohammedan family and is not allowed to go into the temple of Jagannath, and he was simply staying on the beach. शिला हरिदास ठाकुर जिनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, तो निश्चित रूप से वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जा सकते थे, इसलिए वो बाहर रहा करते थे। And every day, often Chaitanya Mahaprabhu would personally go and bring prasad to him. और प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते थे और उनके लिए प्रसाद लेकर आते थे। And Haridas would simply sit there and he would have darshan of the chakra on the top of the Jagannath temple, and that was his darshan of Lord Jagannath. शिला हरिदास ठाकुर केवल जो मंदिर के ऊपर चक्र है उनका दर्शन लेते थे और उनके लिए विग्रहों का दर्शन वही दर्शन था। And in this way he would sit there and chant his 3 lakh names every day. और इस प्रकार से वो बाहर बैठकर जप करते थे और वे लगभग 3 लाख नाम जप करते थे। On this particular day, Govinda came there with the Mahaprasad and he found Haridas laying on his back and he was very slowly chanting the holy name. इस दिन जब गोविंद महाप्रसाद लेकर आए तो उन्होंने देखा कि शिला हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं और अपना जो जप कर रहे हैं बहुत ही मंद स्वर में कर रहे हैं। Right? If we're laying on our back chanting the holy name, that's not really recommended. लेटकर जप करना ये ठीक नहीं है। Unless we may be invalid, we may be in poor health, then of course in that situation, then
you lay on your back and chant. जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब हम लेटकर जप कर सकते हैं. But Govinda was surprised and he asked Haridas that what is wrong? Are you not well? गोविंद बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर से, क्या आप ठीक नहीं हैं? And Haridas said, yes, my disease is I have not been able to finish my rounds. और श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ क्योंकि मैं अपने जो नाम जप की संख्या है वो पूर्ण नहीं कर पाया. Because Haridas had made a vow that he would chant every day 3 lakh names. And if we don't keep our vow, then it's a disease condition. श्रील हरिदास ठाकुर ने 3 लाख नाम जप करने की प्रतिज्ञा ली थी और क्योंकि वो 3 लाख नाम जप नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो कह रहे थे कि वे बीमार है. इसी प्रकार से जब हम भी हमारी जो हमने प्रतिज्ञा ली यदि हम वो पूर्ण नहीं करते तो एक तरह से हम भी बीमार हैं. In the Krishna consciousness movement, the initiated devotees all make a vow to chant at least 16 rounds minimum. कृष्ण भावनामृत में जब कोई भक्त दीक्षा लेता है तो वो प्रतिज्ञा लेता है कि कम से कम वह 16 माला का जप करे. And if we're not keeping that vow, then we're in a disease condition. और यदि हम उस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाते तो हम बीमार हैं. It's very important for our Krishna consciousness. We must keep this vow. हम कृष्ण भावनामृत में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें. So the next day, Chaitanya Mahaprabhu personally came there to bring the Mahaprasad to Haridas. दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं महाप्रसाद लेकर श्रील हरिदास ठाकुर के पास गए. And again, Lord Chaitanya inquired that, is there any special problem, anything we can do to help you to recover your health so that you can be better? चैतन्य महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर से पूछा कि हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं जिससे कि आप इस बीमारी अवस्था से ठीक हो पाए. So Haridas explained that I'm just having great difficulty to complete my vow in chanting the holy name. और श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं अपनी जो प्रतिज्ञा की है नाम जप की मैं उसको पूर्ण करने में सक्षम नहीं हूँ. So Lord Chaitanya Mahaprabhu said to Haridas that now you're in old age, you don't need to chant all these rounds. चैतन्य महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर से कहा कि आप अब बूढ़े हो गए तो आपको इतने नामों जप करने की आवश्यकता नहीं है. There are some concessions for people in older age. कुछ जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है. Just like Ekadasi, it said once you're over 80, anybody over 80 here? कोई यहाँ पर है जो 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है? I don't think so, no. So none of you. Anyway, when you get to 80, you can look. Once you're over 80, you don't have to follow Ekadasi. महाराज जी कह रहे हैं कि जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो उनको एकादशी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है. But you still have to chant. You have to do 16 rounds minimum. परंतु फिर भी आपको 16 माला जप का करना आवश्यक है. Anyway, Lord Chaitanya told Haridas, you're already liberated because you've done already so much chanting. You're already liberated. You don't need to worry about keeping up this vow. चैतन्य महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर से कहा कि आप मुक्त है, आपको इतने नाम जप करने की आवश्यकता नहीं, आप तो मुक्त है. But Haridas Thakur was not very happy to hear this from Lord Chaitanya. श्रील हरिदास ठाकुर जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न नहीं थे. And he said to Chaitanya Mahaprabhu, he said that, you know, I can understand that the time is coming soon where you're going to finish your pastimes in this world. श्रील हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप आपकी शीघ्र ही आपकी लीला समाप्त करने वाले. So he said, I don't want to be left in this world without you here. I want to leave before you leave. श्रील हरिदास ठाकुर कहे कि आपके जाने से पहले मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ आपके जाने के बाद भी. Haridas Thakur said, it's my desire that I could leave this world in your presence and chant your holy name at the time of my departure.
श्रील हरिदास ठाकुर कहे कि मैं आपकी उपस्थिति में भगवान के नामों का जप करते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। So Chaitanya Mahaprabhu said it would be very difficult for me to be here without you. चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आपके न रहते हुए यहाँ रहना। How can you leave me? आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? But Haridas said to Chaitanya Mahaprabhu, he said, no, my Lord, you have so many jewels here. There are so many other wonderful devotees. They're all much greater than I am. श्रील हरिदास ठाकुर कहे कि आपके अनेक पार्षद, आपके अनेक अच्छे भक्त यहाँ पर है, मेरे से भी बहुत अच्छे भक्त। So he said, Haridas said, I'm born in a very low family, I'm very diseased, I'm very contaminated, I'm not a great personality. श्रील हरिदास ठाकुर कहे कि मेरा जन्म निम्न है, मैं शुद्ध नहीं हूँ और मैं बहुत उच्च भक्त नहीं हूँ। Anyway, Chaitanya Mahaprabhu heard these words and then he said, anyway, whatever the Lord desires will happen, and then he left to do his midday duties. इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ वार्तालाप के पश्चात महाप्रभु अपने नित्य कार्यों के लिए गए। Hare Krishna. So the next day it happened, Chaitanya Mahaprabhu came again with a big assembly of devotees. दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु अनेक भक्तों के साथ वहां पर हरिदास ठाकुर से मिलने आए। And Chaitanya Mahaprabhu began to glorify Haridas. Just like he had 5 mouths, Chaitanya Mahaprabhu was speaking all the glories of Haridas Thakur. श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे और इस प्रकार से कर रहे थे कि जैसे उनके 5 मुख हो। And all the devotees were surrounding Haridas, and they were hearing the glories of Haridas from the mouth of Chaitanya Mahaprabhu. सभी भक्त श्री हरिदास ठाकुर के चारों ओर थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंदों से श्री हरिदास ठाकुर की वे प्रशंसा सुन रहे थे। And then Haridas Thakur took the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu on his chest. श्री हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को लिया और अपनी छाती पर रखे। And with tears in his eyes, Haridas Thakur was chanting the name Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. And in this way he gave up his body, surrounded by all the devotees. इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे और वे श्री कृष्ण चैतन्य इस प्रकार से जप करते हुए उन्हें अपने शरीर त्याग किया। And seeing that Haridas Thakur was leaving the world, Vakrishvara Pandit began to lead the kirtan. और जब श्री हरिदास ठाकुर अपना देह त्याग कर रहे यह देखा तो श्री वक्रेश्वर पंडित इन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। And they had a wonderful kirtan, chanting the holy names. At that time, they had to arrange the final rites for Haridas. और इस प्रकार से उस समय महान कीर्तन हो रहा था और वे तैयारी करने लगे श्री हरिदास ठाकुर के अंतिम संस्करण की। And Chaitanya Mahaprabhu personally picked up the body of Haridas Thakur and carried him to the sea to bathe his body in the sea. इस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर के शरीर को धारण किया और उस शरीर को लेकर वे समुद्र के निकट गए उनको स्नान कराने के लिए। Then they dug a hole at the beach, at the side of the beach. They dug a hole there where they wanted to put Haridas Thakur in samadhi. और समुद्र के किनारे ही उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें कि श्री हरिदास ठाकुर जी की शरीर को रखना था। They first of all covered Haridas's body with sandalwood paste from the temple of Jagannath. सर्वप्रथम उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर के शरीर को जगन्नाथपुरी के जो मंदिर से जो चंदन था उससे उसका लेपन किया। And they brought also silken robes from the temple of Jagannath. और जगन्नाथ मंदिर से उन्होंने जो रेशमी वस्त्र था उनको भी लेकर आए।
And different flowers, of course, were also offered. और अलग अलग प्रकार के पुष्पों को भी अर्पण किया. And in this way, Chaitanya Mahaprabhu personally placed Haridas Thakur's body into samadhi. और इस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर के शरीर की समाधि बनाई. And Chaitanya Mahaprabhu personally covered his body in sand. और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने श्रील हरिदास ठाकुर के शरीर को ढका रेत से. And then they put a platform over the place where they had immersed his divine body. और उस प्रकार से उस स्थान पर उन्होंने अपने हाथों से उच्च स्थान बनाया समाधि के समान. Then Chaitanya Mahaprabhu personally went to the marketplace to beg boga from all the shopkeepers. चैतन्य महाप्रभु स्वयं अनेक बाजारों में गए और श्रील हरिदास ठाकुर के लिए उन्होंने भोग के लिए भिक्षा मांगी. And he would tell them that a great devotee, Haridas, has left the body. We want you kindly donate as much as you can so that we can make a nice feast in his honor. चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रार्थना की कि श्रील हरिदास ठाकुर ने देह त्याग किया है तो उसके ऊपर फीस्ट बनानी है, तो आप जितना भी दान कर सकते हैं प्रसाद का तो आप दान कीजिए जिससे कि हम सभी भक्तों को प्रसाद दे सकें. However, Swarup Damodar came there and he said, "My Lord, this is not your duty. Let us take care of this." And Swarup Damodar arranged 4 men and 4 servants. And they all went and they collected and brought all the boga and they organized a very big festival. स्वरूप दामोदर जी आए और उन्होंने कहा कि महाप्रभु ये आपका कार्य नहीं है, और फिर इस प्रकार से उन्होंने भक्तों की सेवा में लगाया और कुछ सेवकों को भी इस सेवा में लगाया. उन्होंने फिर इस प्रकार से भिक्षा प्राप्त की और फिर सभी भक्तों को फीस्ट दिया. And Chaitanya Mahaprabhu personally began to distribute the prasadam to everyone. चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने अपने हाथों से सभी भक्तों को प्रसाद सर्व किया. Of course, Swarup Damodar would not let Lord Chaitanya do this, and he told him to sit down, that we will do this. स्वरूप दामोदर जी नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रसाद सर्व करे, और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु बैठे और प्रसाद स्वीकार करें. And until Chaitanya Mahaprabhu ate, no one would eat anything. और वो कहने लगे कि जब तक चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कोई भी भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं करे. So Chaitanya Mahaprabhu personally spoke the glories of Haridas Thakur. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने श्रील हरिदास ठाकुर की प्रशंसा की. And it's mentioned in the Chaitanya Charitamrita that not only was he a faithful chanter of the holy name, but he was also the greatest scholar. चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है कि श्रील हरिदास ठाकुर न केवल श्रद्धा पूर्वक नाम जप करते थे, परंतु वे एक बहुत बड़े विद्वान भी थे. Now we would be surprised. We would think, how is it possible? Haridas Thakur, he was a Mohammedan. He was born in a meat-eating family. How could he be a great scholar? हमें आश्चर्य हो सकता है कि कैसे श्रील हरिदास ठाकुर, जिनका कि जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ जो कि मांसाहारी होते हैं, वो कैसे एक विद्वान हो सकते हैं. But Srila Prabhupada explains to us that the greatest scholar is the one who can conquer over birth and death, the one who can conquer over the material energy. श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो विद्वान है वे वास्तव में वो विद्वान है जो कि जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके और जो इस भौतिक आसक्ति पर विजय प्राप्त. And Haridas Thakur had personally shown that throughout his life, how he conquered Maya Devis and so many different challenges were placed before him. श्रील हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन में दिखाया कि किस तरह से उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की, किस तरह से उन्होंने माया देवी पर विजय प्राप्त की. Sometimes Maya Devi personified personally came to test him. कई बार माया देवी स्वयं उनकी परीक्षा के लिए आई. And then he was beaten also in 22 marketplaces. 22 बाजारों पर उन्हें मारा गया. But he never ever gave up the chanting of the holy name. परंतु उन्होंने कभी भी नाम जप को छोड़ा नहीं. And therefore he could also give up his body at his own will. और इसीलिए वो अपना शरीर अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ पाए.
And his passing away is compared to the departure of Bhishma Dev. उनका जो तिरोभाव है वह भीष्म पितामह के तिरोभाव के किसके समान माना जाता है. Just as Bhishma Dev had the benediction from his father, Maharaj Santanu, that he could leave the body at will. जिस प्रकार से भीष्म देव को यह वरदान था उनके पिता संतनु महाराज से कि वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्याग कर सकते. So Haridas Thakur gave up his body at his own will. उसी प्रकार से श्रीला हरिदास ठाकुर भी अपना शरीर अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ पाए. He gave up his body directly in the presence of Chaitanya Mahaprabhu, chanting his name and holding his lotus feet. इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में और उनके चरणों को अपनी छाती पे रखते हुए उनके नाम जप के द्वारा छोड़ा. So it was the most glorious departure. और ये एक महान तिरोभाव है. And Chaitanya Mahaprabhu gave many benedictions. He said, because Haridas Thakur's body was bathed there in the sea, so he said, from today on, this has become a place of pilgrimage. चैतन्य महाप्रभु ने कई वरदान दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि श्री हरिदास ठाकुर जी को जहाँ स्नान कराया था तो वह एक पवित्र स्थान बन गए. And Lord Chaitanya gave many benedictions to everyone who took part in the festival of Haridas's departure. और चैतन्य महाप्रभु ने कई वरदान दिए जो भक्त इस तिरोभाव में सम्मिलित हुए थे. So we're also remembering the glories of Haridas Thakur here today. और हम इस प्रकार से हम भी श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान यहाँ पर याद कर रहे हैं. Hare Krishna. Are there any questions? किसी भक्त को कोई प्रश्न है? And any of the learned devotees want to say something more? Okay, thank you very much. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Haridas Thakur ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Guru Maharaj, we are grateful that you recreated entire pastime in such a short time here, so we could able to have a glimpse of what the departure of Haridas Thakur is. So thank you very much. His Holiness Bhakti Vighna Vinash Narsimha Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Haridas Thakur Tirobhav ki.